ये हो आई थिंक लाइव आ गया। आवाज कैसे चेक करूं? गुड क्वेश्चन। पर तो स्क्रीन शेयर। मेरे को अपनी आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, म्यूट, कैंसिल, हटाओ सर। यस, पहले तो ये अप टू डेट। लेट्स गो, लेट्स गो। ओके, मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बेसिकली ये इशू सॉल्व कर रहा हूँ। द मेंटेनर हैज गिवन मी टिकट टू सॉल्व दिस, जो अपेरेंटली काफ़ी टाइम से खुला हुआ है। तो मैं बस इसको, छोटा सा चेंज है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, इसको बेसिकली मतलब करके सोता है। तो ये या डूड। ऑल्सो यश, तू क्यों जगा हुआ है? व्हाई आर यू अवेक ब्रदर? बाय मिशन इम्पॉसिबल थीम सॉन्ग बाय द वे, इसको लूप पे। हाँ, ओके। check out the blocks from imported as events. Um, blocks event import CSV event import block event CSV import I think export या import imported as events. Okay, हाँ, done. Okay. dev cd also इस स्ट्रीम पे मतलब मेनली कोड ही करूँगा ज़्यादा। बाय द वे माय कलर थीम, इसको मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ, नॉट बैड। ओह माय गॉड, इतना चैट। मेरा वाइवा है 3rd को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक कर। ओह, ऑलरेडी 760 वेस्ट हो गए। और एचओडी कहती है तूने हार्ड माइंड एंड में देखना है तो चेक करके हाइड बांटने का मेरे को भी समझ में आता क्यों करता है भाई। अपने कॉलेज का जो फाइनल ईयर था वो भी था, मतलब क्या बताऊं। गुड स्टोरीज फ्रॉम कॉलेज। ओके, तो पहले तो प्रॉब्लम रेप्लिकेट करते हैं इसमें। इसको साइड में लाओ, ये सिंक में है। वाह, ओके। एक्चुअली चैट को साइड में रख सकता हूँ। मेरा गिग भी खराब हो गया इस कॉलेज आने के चक्कर में। अयो, कौन सा गिग कर रहा है भाई? एक तो बाल। नाइस नाइस। क्रिप्टो या एजेंट? पॉज। क्रिप्टो एआई एजेंट? ओ अच्छा, क्रिएट, अच्छा किसी और ने पैसे दिए बनाने के लिए कि मतलब, क्योंकि अभी ट्विटर पे रिसेंटली किसी ने टोकन बना के रग पुल करा था। तो इज इट लाइक अ सिचुएशन लाइक दैट जहाँ पे हम टोकन बना के रग पुल कर रहे हैं? यू नो व्हाट आई मीन? क्रिप्टो एजेंट बाय द वे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एजेंट करता क्या है? क्रिप्टो में ट्रेड वेड करता है? व्हाट्स द सीन? एक सेकंड, दो तीन चीजें चेक करते हुए। मोस्टली रिसर्च एंड सर्च स्टफ। ओके, इट गेट्स डेट एंड गिव समरी। ओह ओके ओके ओके, गॉट इट। इंटरेस्टिंग यार। इसके लिए तो क्या मतलब टेक स्टैक वगैरह क्या क्या यूज कर रहा है? बिकॉज मतलब अगर क्रिप्टो हटा दे तो ये किसी भी चीज के लिए काम आ सकता है ना।
सेंटिमेंट इंटेलिजेंस, ओ कि कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है. ओ माय गॉड नीरो व्हाट्स अप. वी कैन चेक ऑफ चेन डेटा ऑफ टोकन एंड चेन. लैंग चेन डैम. वो नहीं यूज करा. एग्नो. एग्नो था. हाँ एग्नो ही था ना. वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो कहाँ से मिलता है भाई ये सब गिग्स वगैरह. तो काफी इंटरेस्टिंग है. You did some tools of mine. Hey, let's go. Let's go. Very nice. Very, very nice. Editor. I know doesn't have. Damn. Langchain के पास crypto toolkit है? Oh, damn. Crazy. Actually crazy. Wow, very nice. Very interesting. Got from a friend. भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं यार. They were from Bangalore and they were pretty pressuring to get it done. Oh. Mm. Interesting. Deep insights this. भाई पता है ये मेरे को क्रिप्टो का भी यूज केस दिखा नहीं है. जो एक मेरा अच्छा दोस्त है जो क्रिप्टो में काम करता है वेब 3 में, मतलब अगर क्रिप्टो का पूरा नाम है, बट वो जेन्युइनली अच्छा काम करता है और उसने जो भी मेरे को काम बताया, जो भी उसके केसेस बताए, वो एक्चुअली में सेंस बनाता है. बट फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि मैं क्रिप्टो यूज कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब इन द सेंस कि अगर मैं कोई पेमेंट ऐप यूज कर रहा हूँ, मुझे लाइक एक ऑप्शन होना चाहिए साइड में ना कि क्रिप्टो. आई थिंक ऑलरेडी आ रहा है, मतलब मास मेन स्ट्रीम में हुआ नहीं है, बट आई थिंक लाइक धीरे धीरे होगा वो. इट विल टेक टाइम. व्हेन द इट्स ये थोड़ा बेटर है यार. व्हेन टाइम चेक आउट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हियर, सम आर वेरी गुड. कहाँ से? कैन यू शाउट आउट? भाई नीरो. सेम थॉट, बेटर आई कोड फॉर इट नॉट यूज इट. आई मीन वेब3 में पैसे है भाई, वो तो कोई डाउट ही नहीं है. इनफैक्ट मैं सोच रहा था अगस्त से अगर मैं नेक्स्ट के 6 महीने सिर्फ वेब3 में करूँ, ये नहीं सोचो कि यूज केस क्या है, और सिर्फ मतलब या तो रस्ट या गोलैंग में भी थोड़े ब्लॉकचेन्स है. हाइपरलेजर करके कॉलेज में एक मैंने ट्राई करा था. मतलब मेरी टीचर ने बोला था इसमें देखने को हाइपरलेजर, क्योंकि इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये लोग गोलैंग में लिखता है. एंड मतलब इनको मैंने ईमेल वगैरह करा, मैंने रिस्पॉन्ड वगैरह करा कि भाई ये देखो ये देखो ये देखो, तो इनका काफी मतलब इंटरेस्टिंग है. दे गो टाइपस्क्रिप्ट मेंशन्ड, तो इनका है काफी इंटरेस्टिंग. ग्लोबल एजेंट हैकाथॉन मई 2025. ये वाला also टॉप चैट लाइव चैट पे. हाँ, चेक माय न्यू रस्ट प्रोजेक्ट ऑन माय प्रोफाइल पर पाइकिल. ओ मैंने देखा ये. आई रिमेंबर सीइंग. आई थिंक तू फीड में आता रहता है. क्या गया? मतलब तुझे यूजुअली करते हो कुछ ना कुछ फीड में आते हैं, जब तू स्टार करते किसी चीज को या किसी चीज को, तेरे वो ट्राई रेटर या टूल किट में आता है ना, तो उसमें दिख जाता है मेरे को. आई एम श्योर अभी आ जाएगा 2 मिनट में. भाई कितने लोग क्या कर रहे हैं. हाँ ये रहा ना. किधर है ब्रदर? पाइक, देयर यू गो. रस्ट मेंशन, लेट्स गो. वो डॉकर डिप्लॉयड मस्त्रा एआई एजेंट सर्वर. भाई यार तुम एआई में तो बड़ी चीजें कर रहे हो. वेरी वेरी नाइस. पैर पैल ये देखा मैंने. क्रेजी. भाई आई थिंक मेरे इसके आधे है. effortlessly find and clean up. very nice. कोड रिव्यू टाइम. मेरे को पाइथन बिल्कुल नहीं आता बाय द वे. पाइथन कह रहा हूँ, रस्ट बिल्कुल नहीं आता बाय द वे. ड्रॉ यूआई. ओके. ड्रॉ यूआई वापस. ओके. ऐप डॉट नेक्स्ट. ऐप डॉट प्रीवियस. ड्रॉ यूआई. ड्रॉ यूआई कहाँ से आ रहा है? यूआई से. ओके. यूआई किधर है? ड्रॉ यूआई. फाउंड वर्चुअल एनवायरमेंट्स. ऐप डॉट
virtual environments dot iterate dot enumerate. Okay. Marker size megabytes modified. Ooh. ओके. ओ अच्छा, ओके, तुम बेसिकली ढूंढ के. इंटरेस्टिंग. समवॉट गेट इट. तो ऐप प्रीवियस और ऐप नेक्स्ट का क्या फायदा था? ओ, स्कैन फॉर एनवायरनमेंट्स. ठीक है, करंट डायरेक्टरी स्कैन फॉर ब्रदर. बाय द वे, फंक्शन नेम्स आई लाइक इट. जिसको रस्ट नहीं आता, वेरी नाइस फंक्शन नेम्स इंग्लिश. म्यूटेशन ऐप, ऐप डॉट न्यू. ऐप कहाँ से आ रहा है? ऐप. ऐप. ओ, इम्पल, लेट्स गो. स्ट्रक्ट. तो एक ऐप में इसको ऐप क्यों नाम रखा है? क्योंकि मतलब समझा नहीं. लाइक बस नाम में अभी ये रखा है कि व्हाट्स द. ओ माय गॉड, बोल्ट का हैकाथॉन है, देख लो. ओ या. एक सेकंड भाई, क्या क्या हो रहा है? पाइकिल था ना लास्ट? पाइकिल, पाइकिल, हाँ. बोल्ट का हैकाथॉन है, देख लो. हाँ, स्कैनर लॉजिक देख. ओ ओके. एक सेकंड पहले ये देख लेता हूँ. ऐप सेलेक्टेड. ओके. नया. ठीक है, तुम तो क्रिएट कर रहे हो प्रीवियस. ओ, लेट्स गो. लेट्स गो. ओ अच्छा, तुम बेसिकली तो ये क्या है? ओ वेक्टर, लेट्स गो. स्कैनर लॉजिक ना? ओ माय गॉड, टेस्ट केसेस आई थिंक टेस्ट केसेस के लिए ना? एम आई रॉन्ग? गेट डायरेक्टरी साइज. ओके. बट भाई मतलब ये खुद से लिखा है कि मतलब वाइप कोड, लाइक एआई हेल्प. स्कैन फॉर. भाई गिटहब का इतना बुरा यूआई क्यों है? लाइक लेट्स मी कोड रिव्यू. ऑल्सो हाय श्रीराम, बाय द वे, आई जस्ट. मैंने देखा ये. अभी नेक्स्ट यूआई कमेंट्स पुश करूंगा, उसके बाद पता चलेगा. ऐप एंड रॉ यूआई. ओके. बस डिफॉल्ट पाइनविंस का नेम से सर्च करो. गॉट इट, गॉट इट. वर्चुअल एनवायरनमेंट इन्फो पाथ, उसका साइज, उसका लास्ट मॉडिफाइड. व्हाई आर वी, व्हाई डज दिस मैटर? इम्पल, लेट्स गो. नया वर्चुअल एनवायरनमेंट इन्फो. ये साइज इधर से मिल रहा है. मेटा डेटा लेट्स मेंशन. मॉडिफाइड मेटा डेटा मॉडिफाइड. ओके. ओके. ओ आई गेस, क्योंकि अगर तू कल को यूजर को ऑप्शन देगा कि ये डिलीट करना है कि नहीं, तो लास्ट मॉडिफाइड के बेसिस पे देगा. इंटरेस्टिंग. स्कैन फॉर वीएनवी. तू ट्री वॉक कर रहा है क्या? ओ माय गॉड, लिटरली डायरेक्टरी वॉकिंग. ओके. entry dot file name dot string dot lossy to lowercase. fair. oh, dot env क्यों हटा रहा है? बड्डी, आई वुड बी स्कैर्ड ऑफ दिस. आई थिंक इसको तू ऑप्शंस में डाल सकता है कि तू बेसिकली जब अपने डिफॉल्ट्स तो रख, और उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी तेरा यूजर है उसको ऑप्शन दे दे कि एक मतलब अपना कन्फिग तू अपना दे सकता है, जिसमें वो कन्फिगर कर सकते हैं कि मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट इस चीज़ को बुलाता हूँ. तो जब भी तू अपना क्या कहते हैं कमांड लाइन में रन करेगा, तो बेसिकली वो कन्फिग से फाइल लेके जो भी नेम्स है जेसन मान ले, नेम्स के एरे में जो भी है उससे रीड करके सारे नेम स्टोर करके फिर तेरे डिफॉल्ट्स के साथ साथ ही हटा देगा. तो because I wouldn't want my .envs getting deleted. But yes, results.push. Okay. But तो root का है इसमें. path. Okay. यार तुम मुझे करे रस्ट में बस, तो ये पूरा सिस्टम का कर रहा है क्या? फिल्टर मैप. आई एम गेसिंग तुम्हारे पूरे सिस्टम का ले रहा है. वो भी यूज केस रिसर्च कर रहा है. आई कैन गेट द .py config file that gets created during. घिसा है दो. एक सेकंड, कहाँ पे? डैम. यूआई एज इन इसका पाइकिल का, क्योंकि आई थिंक ratatouille rust great for looking up, cooking up, sorry.
यूजर टर्मिनल जो भी। इंटरेस्टिंग। बट ये मुझे ये पूरे एज इन तेरे पूरे सिस्टम का डायरेक्टली वॉक कर रहा है। क्रेजी। वेरी नाइस। आई लाइक इट। इनफैक्ट पाइथन को जो भी चीज हटाती है सिस्टम से, मैं तो इसको स्टार करो भाई से, हो जा स्टार। मेरे सिस्टम से तो पाइथन कंप्लीटली हटाने का भी एक टूल बन सकता। मोस्टली मैं सिस्टम का करना चाहता हूँ। ओके, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू सर्च थ्रू डायरेक्टरीज बिफोर लेवल एंड आफ्टर लेवल। ओह ओके ओके ओके, मैं ड्राइव का करना चाहता हूँ एंड यस मैं टू डू ही सीख रहा हूँ। लेट्स गो। आई मीन आई डोंट थिंक सीखने की जरूरत है, बट ओह, तो ऑलरेडी यूज कर रहा है। ओह, इंटरेस्टिंग। लेट्स गो, लेट्स गो। वेरी नाइस, लेट्स गो। और भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ए, एक सेकंड, ये इसने गो को क्यों स्टार करा? आई विल हैव टू मैसेज हिम। हरकीरत डूइंग स्टफ। बेटर अप टाइम, बेटर अप टाइम रस्ट। क्या चल रहा है भाई कोहॉर्ट 3 में? तुम लोग बेटर अप टाइम बना रहे हो? मैं भी बना दूंगा यार, ऐसे मतलब थोड़ा फोमो हो रहा है। गो ह्यूगो मेंशन्ड। ओह बाय द वे ऋतिक, आई डोंट नो अगर कभी देखेगा, वेरी नाइस स्टफ। 99% ऑफ क्वेरीज इन 0 milliseconds। ये तो अमृत है। व्हाई इज ही बेंचमार्किंग जेमिनी? ए, यश तो वापस दिख गया। लेट्स गो, चलो। ये क्लाउडफ्लेयर का बंदा बाय द वे, 3.1। देखो भाई उसने चीजें ऐसी बनाई है, क्रेजी। यूजिंग रस्ट एंड अदर बेटर स्टैक, न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड, गो बैक टू ग्लोब। ओ हाँ हाँ सॉरी, आई थिंक वही खोला था ना। हाँ, क्या देखो इसमें? ओ, मंथ लॉन्ग ओपन सोर्स एआई एजेंट हैकाथॉन ओपन टू। गॉड डैम, डैम। क्या देखना है इसमें? इश्यूज एंड पीआरस। ओके, wow. AI powered personalized learning assistant with smart content chatbot, AI powered QA test generation. Let's go. Lumen, advanced real time virtual browser testing framework, home buying real estate, AI counselor. Damn. Roast folio. Lol. रियल टाइम इमोशनल इंसाइट फॉर वीडियो मीटिंग्स। पता है, ऐसी जो चीज़ें है ना, जो जब भी एआई को तुम ह्यूमंस में डाल रहे हो, ह्यूमंस में डाल नहीं रहे हो थैंकफुली, बट लाइक ऐसे ह्यूमन इमोशंस वगैरह के लिए, ब्रो मैं स्माइल करके तो मैं झूठ बोल सकता हूँ कि मेरे को एक्चुअली उदास फील हो रहा हूँ, यू नो। अनलेस तुम बेसिकली अज्यूम करो कि हर एक इंसान का जो भी उस मोमेंट पे ऑथेंटिक फीलिंग चल रहा है, ऑथेंटिक फीलिंग, बट जो भी फीलिंग है वो मतलब चेहरे पे दिखा रहा है, जो लोग नहीं करते हैं। बट एनीवे, इंटरेस्टिंग यूज केस। सुपर विजर्ड एआई, आरसी व्हीकल्स, आई थिंक इसने बनाया हुआ है ऑलरेडी। मेमोरी पैल, इंटरसेक्ट एक्स, कैंडिडेट एनालाइजर, वाओ। एआई पावर्ड यूट्यूब प्रोटेक्शन, डैम, गॉड डैम। SEO, Insight Hub, Analyze, Compare, wow. This could be useful, yeah. आई थिंक एआई का पूरा पॉइंट है कि जो लोग मतलब जो भी अभी नो कोड चल रहा है, तुम उसको नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो। ओह, ओके। कंटेंडर 1K, डैम। 500, 500, नाइस। ओह, wow, chill work email agent project submission, code for AI polytutor, memory pal, hey nice। पढ़ा यार, AI agent TypeScript SDK generator, boss, what? uh,
ये तो ठीक है। AI agentic TypeScript SDK generator. Why are we generating SDKs, boss? चलो इसके बाद what? Uh, okay. Oh. Okay. Interesting. I would say इसके लिए टेक्निकली एआई की जरूरत नहीं है, बट देन आई थिंक एआई हर चीज में आ जाएगा, तो आई शुड जस्ट शट अप। लिजिट एनिमेशन, ओ ब्रो, तूने ट्विटर पे मिहिर करके देखा है क्या? हाँ, आई नो मैंने देखा है इनफैक्ट। कौन है उसका? uh, मिहिर डेव ट्विटर। ये बंदा भाई, पता नहीं आसपास क्या खुल जाए। लॉल, दिस गाय, क्रेजी डूड। उसका जो मैंने वाला प्रोजेक्ट है, कहाँ गया वो? बाय द वे, मीडिएटर, व्हाट इज मीडिएटर? ही इज इन कोहॉर्ट 3 है। आई डोंट थिंक उसको कोहॉर्ट 3 की जरूरत है। समझ रहे हैं? नो, आई थिंक उसको ऑलरेडी रिमोट जॉब मिल चुका है। आई थिंक कनेडियन स्टार्टअप पे आ रहा है वो भी रिसेंटली। हरकीरत के उसमें भी तो आया था, पॉडकास्ट पे। ओह, इंटरेस्टिंग, नाइस। चलो, अब आई विल गेट सीरियस एंड कंट्रीब्यूट। टास्क क्यूइंग, प्रोसेसिंग स्टफ, वर्कर स्टफ। यार इन सबको मेरे को ट्राई करना है। आई थिंक किसी स्ट्रीम में प्रोटोटाइप करूंगा ये सब, क्योंकि अभी आई थिंक एक लिस्ट मैंने बनाया है। um, हम्म मेरे को ये चीज़ ट्राई करनी है कि रेडिस का मैं आई थिंक रिसेंटली डॉक्स देख रहा था, तो उसमें रेडिस स्ट्रीमिंग करके आया था कि तुम रेडिस को एक स्ट्रीमिंग इंजन की तरह यूज़ कर सकते हो। अब स्ट्रीमिंग इंजन क्या होता है? कुछ तो था उसमें कि यूजुअली क्या होता है कि तुम्हारा बेसिकली बैच प्रोसेसिंग होता है ना, कि तुम बैचेस में प्रोसेस करो किसी टाइम, लाइक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में। बट इंस्टेड ऑफ तुम बैच में प्रोसेसिंग करो, इमेजिन तुम्हारी स्ट्रीम चल रही है, तुम उसको फिर रियल टाइम कर रहे हो। अब क्योंकि तुम रियल टाइम कर पा रहे हो, तो तुम बेसिकली एक्टिविटी मॉनिटर वगैरह चीज़ें बना सकते हो। आई वाज लाइक, लेट्स मेक अ स्टाइल प्रोटोटाइप। इफ यू आर गोइंग टू, डोंट डू इट इन पाइथन, डू इट इन योर स्टाइल इन स्टैक। क्या? कौन सा पार्ट? मैं पाइथन इन जनरल नहीं यूज़ करने वाला हूँ, अनलेस लाइक ज़रूरी पड़े। आई थिंक पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए मेरे को टाइपस्क्रिप्ट या गो ही यूज़ करना है। तो मतलब वो मेरा स्टैक होगा पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, अभी एटलीस्ट 2025, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें जिसपे मैं अभी अच्छा हूँ, बट वैसा वाला अच्छा नहीं हूँ जो एकदम मतलब जिसमें मेरा भी दिमाग फट जाए कि लाइक ओ वाह क्रेजी। समझ रहे हैं? तो उस पर मेरे को और थोड़ा ग्रास्प लेना है कि अभी जो है नॉर्मल तुम्हारे पैटर्न्स वगैरह हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, बट एक्चुअली मतलब क्लीन कोड जिसे बोलते हैं, क्लीन कोड, समझ रहे हो? कि किसी भी ओपन सोर्स कोड बेस में चले जाओ जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, और उसमें मतलब समझ पा रहे हो कि ठीक है इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, वैसा कोड इमेजिन तू लिख रहा है। नॉट अप इन पाइथन रेंडर दैट। ओह वैस इसकी वजह से, लॉल। आई थॉट लाइक कह रहा है कि ना ब्रो, पाइथन रिबेल अगेंस्ट पाइथन। एनीवे, बाय द वे, इसमें और क्या मुझे कुछ तो ट्राई करना था। आई थिंक काफका भी ट्राई करना था। और क्या ट्राई करना था? आई थिंक पब सब्स इन जनरल जो थे। एनीथिंग एल्स? आई डोंट नो, होगा कुछ, जब दिमाग में आएगा तो कर लेंगे। हम्म चलो एनीवे, अब मैं म्यूजिक चला के थोड़ा कोड करते हैं।
settings किधर है? I have to export CSV rundown. Oh, blocks from XLXX. Okay. XLXX. Import spreadsheet में तो import कर रहा है. I think like एक और रीजन है कि इस कोड बेस में जो CSV और इन सब का पार्ट है उसमें मेरे को थोड़ा फेमिलियर होना है. इसमें इंपोर्ट कहाँ से करूँ मैं? क्लियर रनडाउन, क्रिएट इवेंट, क्लियर रनडाउन. ठीक है. अभी इसमें मैं अपलोड कैसे करूँ? यस. एक्सेप्ट XLXX फाइल जो ठीक है, बट बेसिकली यहाँ पे लॉल आई थिंक डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा. डेमो बार भी मेंशन्ड. लेट्स गो. एक सेकेंड. डेमो कहाँ गया है? मैंने वापस नहीं एक्सपोर्ट करा क्या? हाँ. लोड प्रोजेक्ट पर. अरे which I know solution. मैं स्ट्रीम पे वो चलाना भूल गया. एक सेकेंड. एटलीस्ट तुम लोग के लिए, मतलब तुम लोग ऐसे बोलो तो बहुत लोग है. हाँ. मेरा मतलब बैकग्राउंड में वो चल रहा है मिशन इम्पॉसिबल का. ऑल्सो फ्री. डन. लेट्स गो ब्रदर. कभी करेंगे. अभी थोड़ा काम. व्हाट? अभी थोड़ा मतलब हेक्टिक चल रहा है मेरे उसमें भी. आई नो तुम लोग ऐसे कुछ सारी कौन सा बड़ा स्ट्रीमर ब्रो. स्टार्टर नाइस. पिन पिंडर. मैं इन जनरल तुम लोग बोलता तो आई थिंक उसके वजह निकल जाता है. ऐसे नहीं. नाइस. ओके. सेटिंग्स में जाना है. प्रोजेक्ट डेटा, एक्सपोर्ट. ब्रो व्हाट? इशू क्या था? क्रिएटेड use Google Sheets for further editing, downloaded as XLXS from Sheets. When I imported this sheet, the block appears as okay. Oh, तो ये तो मैंने पिछली बार चेंज करा था इसमें. यस, इसमें चेंज करा था मैंने. पार्स फील्ड ना, मिलीस टू मिलीस स्ट्रिंग, यानी पार्स फील्ड का यूज करा था. यस. मेक टेबल का यूज हो रहा था. Yes, there you go. Download project, download CSV. Okay. Sheets.new. मेरे आंखें फट गई because why light mode.
import upload replace spreadsheet detect automatically. God damn. Okay. Okay. Time and duration और ये सब ठीक है. Lunch break which is great. Skip public. Okay, I think यहाँ पे type add करना था मेरे को. But what about this? क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक्स है राइट तो एंड अगर उसको मैं उस पर खोलूँ प्रोजेक्ट ओ समझ गया गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट गॉट मेक टेबल यस सर बट मेरे को मेक टेबल किससे बनाना है इज द क्वेश्चन ब्रो आई स्वेयर बैंगर म्यूजिक जेन्युइनली सुन सकता है यू वॉच पार्ट टाइम यस अरे मैं आज ही देखा है ब्रो जो फाइनल वाला मिशन इम्पॉसिबल था मैं आज ही देख के आया हूँ तो तभी मैं तो इसको सुनना था मुझे ठीक है यहाँ पे मुझे क्या करना है fields not for each if is on time event और ये टाइप्स पे है ना packages I think utils में होगा oh by the way ये actually काफी interesting काफी common है apparently but थोड़ा interesting by the way यश ये जो पूरा color scheme दिख रहा है मैंने बनाया है just saying coincidence मैं भी इस final आराम से in fact all the best मतलब अच्छा करना okay I'm going to lock in voice is on time event is on time delay is on time block कौन हो भाई तुम bro gotta learn shell and bash stuff एक second using Lua right yes sir Lua mentioned gotta learn shell and bash bro बहुत easy है इसका जो भी मैं सब कर रहा हूँ ना टर्मिनल पे बहुत ही सिंपल है थोड़े तेरे 2-3 वो 20% 80% जो भी बकवास है वो तेरे उसमें भाई इनफैक्ट मैं भी इतना कोई ग्रेट इसमें नहीं हूँ क्योंकि इसमें थोड़े लोग को मैंने देखा है वो लोग सेट करके कुछ यूज करते हैं जो मैंने आज तक कभी सेट ठीक से यूज नहीं करा स्ट्रीम एडिटर फॉर फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट बेसिकली आई थिंक प्राइमरी के किसी स्ट्रीम में था कि अगर मान ले कि तुम लोग हैक हो गए हो तुम्हारा सर्वर हैक हो गया है और उसमें
मतलब तुम्हारे सर्वर पे एक बैकएंड चल रहा है जो तुम्हें HTML कर रहा है, राइट? रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बैकएंड सर्वर जो डायरेक्ट HTML भेजता है टेम्पलेट्स वगैरह के साथ। इमेजिन करो वो हैक हो गया, उसमें किसी ने गाली लिख दी है तुम्हारे सारे HTML टेम्पलेट्स में। अगर तुम्हें उसको सॉल्व करना है, तुम कैसे करते हो? तो आई थिंक प्राइमजन ने बोला कि लाइक उसने कुछ जावा में ट्री वॉकिंग पूरा एक एल्गोरिथम लिखा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो इंटरव्यूअर था उसने बोला कि ब्रो, तुम जस्ट इसमें जाओ, तुम बेसिकली, आई थिंक एक लाइन का था कि ग्रैब करो जहाँ पे भी कुछ लिखा है एंड उसको फिर सेट करके मतलब बेसिकली हटा दो। तो एक लाइन की चीज थी और वो पूरे तुम्हारे प्रोजेक्ट वाइड करेगा। तो ऐसी जो दो तीन चीजें, ग्रैप, सेट, बस यही पता कर ले, बाकी चीजें मतलब कोई फैंसी नहीं है। Did Trello and tweaking themes for a window? Let's go. Clink. Windows CLI tool. Interesting. Personalized theme, but every time I opened the command, the Lua crashed. Something because of my machine spec. Maybe. I don't think so. Also, Ashley, तुम हो कौन? Who are you, brother? I think I know, but just customize theme. In fact, अगर ये करना है, ओ बट नहीं, आई थॉट बबल टी में बोलने वाला था, बट आई एम नॉट श्योर वो CLI कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम आता है। आई थिंक उसमें तुम बेसिकली CLI एप्स बना सकते हो। बाय द वे यश, मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ है, अगर तेरे को बनाने तो बता दे क्योंकि मैं आई डोंट थिंक सारे जितना जल्दी बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो जब कैचअप करेंगे तो मतलब तेरे को सारा बता दूंगा। रायन पीटरमैन कौन है भाई? इंस्टाग्राम प्रिंसिपल इंजीनियर ऑन प्रमोशंस ब्रेकिंग फॉर, कौन है भाई ये? मेरे को ही क्यों आ रहा है? व्हाट? हाँ? ओह सबस्टैक, ओके सबस्टैक, माय बैड बॉयज, सबस्टैक था। चलो बैक टू, आई थिंक इशू मेरे को पता चल गया। चलो अभी तुम नाइस। पॉइंट इज कि मेरे को एक और ये ऐड करना है, इवेंट टाइप तो कुछ नहीं यहाँ पे। मैं इज ऑन टाइम में किसका अगेंस्ट चेक करूँ? वाई? ओ अच्छा, तुम्हारे YouTube पे 10 सेकंड का डिले आता है। इवन तो मैं लाइव चैट पे हूँ, इससे ये दो है ना, सब मैसेजेस एज पर्टिकुलर वर्सेस लाइव चैट, तुम्हारे 10 सेकंड का डिले आता है। गिव मी प्रोजेक्ट। ओह माय गॉड, इतना एक सेकंड भाई, इतना मैंने कैसे मिस कर दिया? किंग for EJs to React transition, literally 70+ endpoints today. Wow. क्यों भाई इतना मेहनत? EJs to React transition. Wow. तुम EJs क्यों यूज करे थे पहले प्लेस में? Crazy. What you work on? Good question. What are you working on, brother? I heard bubble tea before. Give me. I will have something to do. बहुत सिंपल पार्ट, मतलब एज इन सिस्टम डिजाइन वाइज, आर्किटेक्चर वाइज आई डोंट थिंक इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आई थिंक मेरे को भी इसमें चीजें प्रोटोटाइप करनी है। लेकिन मतलब ऐसी चीजें जिस पे ट्विटर पे वायरल हो सकता है। तो इनफैक्ट ये कलर थीम जो है मैं मंडे को लॉन्च कर रहा हूँ, ये सब शेड्यूल्ड है। तो ओ मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा क्या ऐसे? एक्चुअली रिसेंटली जॉइंड बायोटेक, a biotech as a backend developer. Now the transaction from server side to React. Interesting. Oh, as in servers. Oh, EJS template. You. Oh shit. Wow. Damn. Actual मेहनत है वो.
EJS वो मतलब टेम्पलेट वाला जो इंजन है ना, उसकी बात बेसिक तो HTML जो पहले सेंड करा, अब तो रिएक्ट में उसको कन्वर्ट. ओह yikes, I do not know what to say about that, but okay. एज इन मेरे को पूछने कि क्यों, मतलब ये डिसीजन ही क्यों लिया पहले. Also, by the way, I recently joined a biotech as a backend developer. Now the transition from server side to React. Just the stark difference, by the way. In fact, पता है क्या कहते हैं इसका एक अच्छा pragmatic programmer, by the way. एक बुक पढ़ रहा हूँ, pragmatic programmer. Also, I think. Oh, okay. Not. Stream पे दिख रहा है क्या ये? Pragmatic programmer, by the way. But इसमें एक अच्छा पॉइंट था कि अगर तेरे को ऐसा ही सिमिलर एक चेंज का एग्जांपल दिया था कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ चेंज करना है कि HTML की जगह तुम्हें API देना है, तो तुम्हारा कोड ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें बस एक लेयर पे चेंज करना पड़ेगा कि तुम HTML की जगह तुम बेसिकली JSON रिस्पॉन्स दे रहे हो. तो अगर कहीं और तुम्हें किसी और लेयर पे कुछ चेंज करना पड़ रहा है तो मतलब बेसिकली कोड में कुछ गड़बड़ हुई है. तो डीप इनसाइट्स. I am also showing 5. Hell yeah, let's go. Oh, by the way, Yash, peer list अगर तूने सुना है तो peer list पे भी launch कर. Before going for vibe and going dark. You want Twitter EJS template try? Yeah, understandable. In fact, जो मेरा अपना ये है बैंगलोर मीटअप्स का, वो मैंने इस पे पहले सबसे पहले लॉन्च करा. इनसेन रिस्पॉन्स. जो भी लोग एज इन थे, क्या कहते हैं, मैंने क्या कमेंट कर दिया. ओह लॉल. फनी. एक सेकंड दिखाता हूँ. बाय द वे, पीयर लिस्ट इन जनरल लव इट. इसमें एक्चुअल जो तेरा ये है, इमेजिन टेक पार्ट ऑफ ट्विटर का बेस्ट पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे वो ऑडियंस है ऐसी जो मतलब अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह पोस्ट कर रहा है. एंड पता नहीं इसमें डार्क थीम मैं कहाँ पे ढूंढूं. ठीक है, एनीवे. ओ इधर ही तो था. ओह थैंक गॉड मेरे आंखें फटने वाली थी. बट बेसिकली इसमें तुम्हारे यस तो तुम अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च पैड जो है तुम्हारे हर मंडे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहा है. नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे. तो गुड प्लेटफॉर्म. तो इधर चाहे तो अपना लॉन्च कर. यस. इनफैक्ट क्या कहते हैं, अपना जो चाय वाला है वो ऑलरेडी लॉन्च के लिए शेड्यूल्ड है. मतलब टेक्निकली तुम लॉन्च शेड्यूल्ड इस पे पूरा लिखा हुआ है. मतलब सब रेडी है. मंडे फिर लॉन्चिंग. इसको ट्विटर पे डालूंगा. ट्विटर पे भी पोस्ट शेड्यूल्ड है मेरा, तो उसका टेंशन नहीं, बस उसका लिंक डालना है. बाय द वे, ओके कि को देख भी रहा है. 3 लोग देख रहे हो. आई डोंट नो तुम लोग 2-2:30 बजे रात के क्या कर रहे हो. बट git.new/chai git.new/chai boom. git.new/chai. I own it, boys. समझ रहे हो. एनीवे, तो ये भी रेडी है, सब रेडी है, बस पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा है. तो टेक्निकली कोई अभी चाहे तो यूज कर सकता है. जस्ट से hey, I'm continuing with announcement. I have some issues. Should I migrate to Harsh Gupta? Brother, who are you? Trust me, the code is all over the place and very, very crampy. They don't even use TypeScript. Dude, honestly, मेरे को recently अभी एक JavaScript code base मिला है and basically मेरे को बोला कि एक response को map करना है. Basically तुम्हें फ्रंट एंड पे वो रिस्पॉन्स को API बाइंड करके दिखाना है, राइट. एंड मेरा पहला इंस्टिंक्ट था एक टाइप्स वाला, जो मतलब टाइप्स फोल्डर में जाओ, फाइल बनाओ, उसमें अपना लिखो जो भी टाइप का. सडनली रियलाइज किया यार इस जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है. अब मैं जावास्क्रिप्ट में मैं टाइप्स कैसे करूं. बट लकीली JS docs करके एक है, चाहे तो ये यूज कर सकता है अगर जब भी तू रिफैक्टर करेगा. तो आई एम श्योर तेरे को पता होगा ऑलरेडी, बट लाइक जस्ट मेरे को काफी हेल्प करा इस चीज ने. इवन दो कोड बेस टाइपस्क्रिप्ट में नहीं है. तो I'm currently using Linux Mint and having some issues here and there. Should I migrate to Arch Linux? भाई तू मीम कर रहा है कि genuinely पूछ रहा है? Because Arch में move करना is a bit painful. I'm not going to lie. But कौन से issues हो रहा है?
Like, what's the issue exactly? Oh, that should not happen in general. um, what Linux Mint are you using? Google ही कर ले कभी. Linux Mint black screen issue. इधर probably तुम्हारा desktop environment या कुछ निकल गया होगा. Incorrect graphics drivers, display settings, bootloader ratios, corrupted installation files. Yeah. Do you have NVIDIA driver by any chance? By the way, मेरे NeoFest मैंने काफी टाइम से देखा नहीं है. Let's go. Let's go. ये थोड़ा कम नहीं लग रहा? Okay. Crazy. 862 packages only. Let's go. Okay. अब मैं बस 237 राइट 240 पे वापस मैं कोडिंग पाऊंगा. Oh my god, bro. Okay. I know. तू तो सब्सक्राइब करा हुआ है? Crazy. Damn, I didn't think you would subscribe, dude. Thanks. Postgres trans. Oh, dude, I think I remember. Wait, क्या उसका था? Dude, also, are you as active on Twitter? Because like, मतलब I used to see your tweets बहुत पहले. अभी थोड़े टाइम से दिखे नहीं है मेरे को. Can you like drop the link here because I want to actually open it. मैं भी ढूंढ ही रहा Twitter पे एक second. Dude, also you have to have the link in your bio. Like, there is nothing on the bio, dude. We need links on the bio. मिल गया. Got it. For sell.app, I believe. Let's go. Oh my god, is this Astro? Article, hidden transaction. Let's go. Yash, gotcha fam. भाई मैं लिंक्स के लिए पोस्ट कर सकता. Wow, crazy. Honestly, I will actually save this. Where is my code blogs? There you go. How big is this, by the way? Because I might read it on stream itself. Also, Vinay, can we have dark mode? Can we have dark mode on this? Even if your query isn't a transaction, it's a transaction. What? You're telling me my SQL query is a transaction? Postgres handles queries internally and was generally used to understand. I use Postgres all the time. Postgres mentioned. By the way, do you see SQL or squeal? Because there's a difference. So just made a deep dive into it. I'll read thoda because I'm actually now a bit interested myself. Kind of behavior most people don't even realize exists. Figured why I should write about it. Let's talk about it first. How can you even reach the backend process? Dude, if you know Uncle Bob, this guy, he's the guy who wrote clean code and whatnot. So he started his morning bathrobe rants. One of the first thing he was talking about was SQL only, like what happens when you get a query and like how like something about data representation and whatnot. That was pretty interesting. So how a query even reaches the backend process? Yes. Okay, client listening on 5432. Postmaster process. List. Is this supposed to be listener? Okay, I'm guessing that's a listener. Spawns a new backend process. Okay, this is the thing that processes your query. Got it. Postmaster is the main server process that always listens. Dude, I'm a bit slow to read. It's like 240, so don't mind me. Postmaster is the main server process that is always listening for incoming connections on a specified port number 543. Postgres mentioned. And whenever this process receives a connection request, it spawns a new backend process dedicated to handling that client session. So, wait. How does, like, is this linked with connection pooling then?
मतलब, oh no, connection pooling would be on this side, right? Yeah, I think. I'm not sure. देखते हैं. Spawns a new backend process dedicated to handling that client session. That child backend process manages all the interactions. Wait, that child backend process manages all the interactions with client from passing of the query to the execution. Okay. Inside the backend process, parsing and transaction determination. Backend process. Oh, these are images, dude. Damn. मेहनत यार. Backend process SQL query received creates parse tree mentioned statement type. If it's a begin or a commit, what are these exactly? Active transaction context. Okay, interesting. Once the backend process receives the query, it first invokes a raw parser mentioned built with Flex and Bison. Bison, dude, I've not heard that in a long time. To check SQL syntax and produce the initial parse tree. Okay. Transform files to C files, auto-generated C files. Yeah, yeah, yeah. Wasn't like Bison some funny name, or was that? Yeah, nahi. There was some name for like some another Lexer or something. I don't remember. कुछ तो था. By inspecting the first node of the parse tree, Postgres figures out whether the query should be treated as an implicit or explicit transactions. I see underlines. Let's go. Oh, mentioned it. Thank God. Good job, dude. Honestly, someone who doesn't um, have good context on reading tech stuff, like I have to really focus on what is this, what is that, what is this. I appreciate the definitions over here. Like it's helping me. Implicit transactions, standalone queries like select. Okay. Even standalone query like select is wrapped inside an implicit transaction to. Okay. Asset mentioned. I don't really understand this like by instinct, but that's also because like I've not brushed up on SQL for a while. Explicit multiple queries wrapped within a begin / commit explicitly. Okay. Oh, okay. Got it. So when you do a transaction in SQL, you specify that you're doing a transaction, right? So I guess this is where the begin commit comes, and that's why it's explicit, because you're specifically saying कि transaction करना है, whereas this is like, oh, like on like the user who's writing SQL, they don't care कि like they don't know transaction हो रहा है, that's like SQL का internal में हो रहा है. Am I right on that? Dude, I was going to read for like the starting of part, but I actually hooked on this. So like, I don't think ज़्यादा बचा भी है, so I'm going to read the whole thing. Wait. Yeah. Transaction is handled in two primary ways only: auto commit and explicit transaction. Okay. What was auto commit over here? Implicit. Okay. Postgres by default operates in auto commit mode, meaning each individual statement is treated as a separate transaction. Wait, each individual statement is treated as a separate transaction. Okay. Interesting. So, wait. How do I say this? You know how like you have compound queries or like complex queries, जो भी बोलते हैं, when you have like क्या बोलते हैं उसे, nested queries, whatever it's called. So does that mean it's like transaction inside a transaction inside a transaction? Everyone is mostly when we begin commit, but every SQL transaction behind the scenes. Bhai, damn. So, dude, whenever I have to think about transactions, I'm always like, okay, I'm doing a transaction right now. It makes sense though, because like the only thing I know about a transaction is कि like अगर transaction में कोई भी particular step fail हो गया, then like it reverts all the previous operations. So I guess if you even do that for a single query, like the default of that would be to kind of undo that single instance itself. I think, I'm not sure. I have to deep dive into SQL now. Where were we? Okay, meaning each individual statement is treated as a transaction, separate transaction. Okay. After transaction determination,
Okay. Start transaction command function. Oh wow. Okay. There's like function. Dude, what is Postgres written in? Postgres SQL. Isn't Postgres open source? Yeah. Postgres is in C. Let's go. C mentioned. How do I start transaction? SGML. Damn. What's SGML, dude? Okay. Oh wait, but there is begin commit and all here. Is this like docs? Oh yeah. Okay. You know what we're going to do? 61,000 commits. Crazy. We're gonna shift over here. Personal process, git clone. Like I just want to see the function now. SQL start transaction command function to initiate an active transaction context using snapshot logs. Also, by the way, I don't know if you've heard of Arpit Bhayani. क्या कहते हैं? Bro, dude, I swear, it's मेरे को बहुत छोटा चेंज करना है इसमें, बट लाइक ठीक है, इस आर्टिकल के बाद मैं ओनली इस पे कर रहा हूँ. कहाँ गया? Where is the thing? Yeah, there you go. Okay. See, this is like good deep insights. This, ठीक है? If I'm getting distracted by an article, it's good. Operations and steps encapsulated within the transaction context. Okay. After parsing and transaction determination, further critical processes take place inside transaction context. But what even is a transaction context? Okay. Active environment where Postgres keeps track of logs, changes, and snapshots for a query, making sure everything can be either safely committed or completely rolled back in case something goes wrong. Dude, I love the images. Like, मैं इतनी मेहनत नहीं करता. Semantic mentioned, planning optimization, executor start. So when does it know which to choose? Is that like a logical question? Also, what's XID? I don't know what's XID. Semantic analysis and rewriting. This phase actually ensures that the query is not only syntactically correct but also semantically valid and optimized for executions. Oh, is it like JavaScript ka hoisting and all? Like, does the what is this called? Yeah, does the transaction context optimize the query for you, or like does it happen? Like it assumes कि optimized होगा. Once the Postgres has completed the semantic analysis and query writing phase. Oh, rewriting phase. Okay, so it basically optimizes it for you, I'm guessing. Okay. Proceeds to the planning and optimization. In this stage, multiple strategies to create a plan tree in the most efficient way to... Dude, how did you go into like all this? Oh, okay. I was gonna say like you could tag him and like, share the article and all. Bro. Crazy. Oh, this is great. Start transaction command. अरे भाई, oh. Wow. Okay. That's in docs. Backend में दिख गया. Okay. How do I GD into this? Why am I not able to GD into this? Did I GD into this? Start transaction command. This is C, right? How do you write functions in C? I sound so stupid while saying that. I've not written... Oh, wait. Isn't it like void something? Yeah. Listen, I've written JavaScript for too long. Let's go. I think I'm close. Start transaction दिख गया. Okay, you know what? We're just gonna go through the whole thing. Start transaction command. Start transaction. I can't believe I just asked how to write a function in C. This is gonna be on stream. Like potential employers are gonna see this. You know what I mean? Where is the function?
I thought दिख गया था. Can you tell me where the function is? Like which file does it live in? Is it just like in the file? Transaction command, start transaction command. दो ही जगह है. Bro, I'm so confused right now. I feel like it has something to do here. You know what I mean? Start transaction command. Nope. Dude, Shashwat, please tell me to stream पे. I could really use some C help right now. But I think वो सो गया होगा. Is he by chance awake? No, I think he slept off. Okay, damn. Should I open it in cursor? I should open it in cursor. That's a good. Wow, did I make a change? Okay, I should open it in cursor. Okay. Bhai, why do I have another Newham open here? Oh, okay. Yeah, I can delete that part. इसमें go through the code base. Tell me where is the logic of start transaction. Come on, तब तक next पढ़ते हैं. Cost estimation, index consideration, join strategies. Now the executor walks in and start traversing the plan tree, executing each node. Okay, the executor interacts with shared memory structures such as shared buffers to read pages efficiently and for write operations. The executor changes are recorded in the wall buffer write ahead log. Damn. Okay, dude, I have no idea about database. I think this is like a lot of new stuff for me also. Executing within the transaction context guarantees that all operations are as mentioned. If an error occurs, the transaction can be rolled back, reverting all changes. This is the only thing I know about transactions. I mean, no, I know more about transactions. You know, potential employer skill. Nobody's watching a 3 a.m. stream, dude. Executor returning back the control to transaction manager. Okay. Once the executor has processed the query plan, it returns the control to the transaction manager. Executor returns. Okay. Let's say default commit rollback. Oh, this is like if something fails, right? Oh, okay. Transaction finalization depends on whether the transaction is explicit or implicit. For explicit transaction, the transaction manager maintains. Got it. Oh, is commit or rollback like the option between you either go ahead with the transaction or when you face an error you roll back? I think maybe. Like you either commit the transaction or you roll it back, right? In contrast, implicit operate under default auto commit mode. So upon successful execution, the transaction manager automatically commits the changes. Okay. Oh, auto commit. Got it. Okay, this is what makes sense. Before finalizing the commit, writes the transaction changes to the val and releases the acquired locks. What are we locking here? Like I read this in college. I don't remember. You know, you will understand the terms then. Thank you. Thank you. Can you like just like send it to me in the DM also whenever you write this? Because like Twitter पे मेरे को miss हो जाता है. With the function name. Wait. Let's see. Where is the? Okay. See, this is why I don't like these editors. इसको 4 पे डालो. Like, why is this here? I don't want this here. Get out. मतलब, this is why I like Newham. You know, like, मेरे को बस code दिखता है. Like, I just want to see code. I don't want to see all these stupid. Like, I don't want to see this. Anyway, where is this file? 3058. Insane. 3058.
See, I knew how to write C, C functions, okay? I just forgot. Anyway, transaction state S is equal to, okay. Thank God I remember like C syntax at least. Switch case, T block default, start transaction. Okay. What's a T block default? Like, if we aren't in a transaction block, just do our usual transaction. So what are these cases? Like when would it not be a, what do you say, a transaction block? Somewhere in a transaction block or sub transaction and about to start a new command. For now we do nothing. Okay. Damn. In सब के लिए error. Crazy. Dude, I just know like Shashwat would love this code base. I'm going to send him like the stream and be like, "कि तू Postgres का code देख." Here we are in a failed transaction block, so we do nothing but remain in the abort state. Eventually, we will get a rollback mentioned command which will get us out of this state. These cases are invalid. Makes sense. Oh, transaction context भी आ गया. This is already done if we call start transaction, otherwise not. Memory context switch to. Nice. Statistics. Look at that. I know a part of the Postgres code base. Not bad. Not bad at all. Logs are applied on rows and tables. These are rules. Their logs are applied. So English is not my best suit today. The logs are applied during an SQL operation, and other queries have to wait to perform. Oh, okay. Got it. Yeah, that makes sense. Got it. It's like mutex basically, right? The problem is that, the concepts are same across everything. Like even Golang has like mutex and Rust may be mutex, but the thing is, like I'm not thinking in database first ke terms. I got, oh, thank you. Like, समझ में आ गया. Release all the acquired logs. This helps durability. So even if any crash happens, the changes can be recovered. Let's go. Transaction manager. Let's go. Summary time. We finished the article. Let's go. If your query is in a transaction, it's a transaction. So we saw this behavior happening where every query, where it's simple select. Hell yeah. Wrapping standalone queries, it tracks log change and whatnot. Nice. One thing I want to ask more. Where's the transaction manager part? This hidden transaction is keyword keeps your database running without even realizing it. Let's go. We read the whole article, dude. Hell yeah. Let's go. इसको बंद करो. Okay, now I'll get back to like the thing. पहले ये खत्म करो यार जल्दी तुम. This is the only use case I found of. By the way, how often are you using like Cursor, like for your workflows in general? Just curious, Let's start, because why not? यश तूने मेरे को अभी फॉलो करा है. Wow. Ouch. Damn. Oh my god. Thank you for starring the color theme. Thank you very much. Okay. For front end, I'm gonna start learning Go. I guess today is that day, or when I have to. Dude, Go. You can. This is what I tried, right? Learn by example, Go by example. This is where I started, and like it's a good enough start to like kind of like get you into Go and like get you familiar with all these concepts. I can get more stars for you. Just wait, bro. I don't want to like hack star. Like I want people to genuinely like the color theme and not like In fact, जो अभी ये color theme है, जो उनका चैनल है ना हितेश सर चाय और कोड, उन्होंने ये VS कोड के लिए बनाया था. उसको मैंने NeoVim के लिए कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज़ मेरे को हमेशा से कलर थीम बनाना था, बट लाइक कलर्स वगैरह पता नहीं थे. I was like, switcheroo, dude. I have to quickly finish my backend debug. Can you more?
Okay. Now I'm going to get back to my thing. Okay, we're back. We're so back. What was I checking here? मैं यही भूल गया. We were checking this, right? Event.type. Do we have a type here? I don't think we have a type here. We do have a type here. Let's go. So blocks are being exported as events. Okay. I'm guessing that's happening here. Yeah. Okay. Yes. Import. Guess it. So let's do this. Let's download this as an Excel. Okay. Let's come here. Let's clear this. So now if I refresh, this should not be there. इसको हटाओ. Yes. Import review, time start. Import preview, apply. So now, let's go. So the issue that happens, what was the issue? Blocks get imported by, yeah. So if you see, I think there was like a lunch break. I think that is gone. Yeah, this is the error. This should not happen. Okay. So thing of getting cursor. Oh, I use cursor to understand the AJS, like to understand behavior. There are a lot of Ajax and Vanilla.js and AJS files. Cursor lets me. Yeah, okay. Single cursor pro. Dude, honestly, like I was a bit against cursor in general. Like all these AI tools जो है, भाई तुम अभी भी generate कर रहे हो? I completely forgot I was like running in the background. So the thing is, I was like, मतलब, like I don't know a lot of things, right? जितना आता है चलो उतना तो आता है, but like there's so many things that like I don't. क्या problem है boss? But like there's so many things to like I don't just still master कि like the thing is whenever I've tried AI tools, I've realized कि मैं eventually thinking उसको दे देता हूँ. Like I stop thinking when it like produces the code. So, oh, transam. What is exact लेकिन? Anyway, so like usually I was against this all like cursor and all, but then काफी hype. I tried to download it and like just tried it out. I had the same experience कि like code wise it's still taking away the thinking from me, except like when I tell it to do something and like चलो एक बार कर देता है. But the underrated use case I found is कि like you just give it a code base and you start asking it questions. Like अभी जैसे ये चल रहा है, because like then like this is like you can understand a lot of open source code bases जो मेरे को हमेशा से करना था, but they were either too complex or I would have to ask Claude कि like भाई ये क्या जो भी. So in that sense like I'm finding it pretty nice. Done. Check now this. भाई यहाँ पे stars manufacture नहीं कराने यार. git.new/chai by the way. git.new/chai. 7 stars, bro. Okay, thank you, but dude, let's like not manufacture stars. ठीक है मेरे को neovim dev. ये कौन है? Damn. Let's go. GSOC mentioned. Let's go. neovim dev. Now we're talking. Thank you, Yash. But अगर उनको पसंद आए तो जाके स्टार करना, मतलब या फिर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कराना. Yeah, but 7 stars pre-launch, not bad. Exact is short for transaction. Oh, X transact. Okay, got it. Okay, now I'll close this and I will come back here. Okay, great. Hey, please tell me like Excel has like a dark mode because मेरे आँख फट गया. I have to have an import data, right? What is my import data doing? थोड़ा
प्रॉपर्ली बैठ के लॉक इन होते हैं बॉयज. Also, why are you guys awake? Yes, तेरा तो why है. Vinay, why are you awake? I know it's a Sunday, but like, why are you awake? Data sources, import spreadsheet. Okay, so this part I got. This part I got. This part I also got. We want to add an extra row, perhaps. How is it making the table actually? Field titles, import spreadsheet. What? Oh yeah. This had like a button, right? What was this ref? File input ref. Yeah, and what were we passing the ref to? We were passing it here. Yes. Input में जाके handle file. Let's go. Okay, this is the file we want to upload. Set has file loading. Validate Excel import. Okay. Panel utils. Panel utils. इसमें क्या ढूंढ रहे थे? Validate. Bro, what? What? Oh, common utils. Upload utils. Common utils, upload utils, validate Excel. Okay, there you go. If not Excel file, throw new error. If file size is 0, it's empty. If file size is more than something, got it. Okay. And then we have upload Excel, right? Common API Excel, common/API/Excel. I don't think backend पे कुछ change करना है, by the way. Mainly it's over here, where I think technically I can just be like, you know, type, and like that's it. So essentially what that would do is, 4 में क्या चला रहा हूँ? Point is, somewhere I was console logging over here, no? I can move this. Project data, where is export? So I export this, and if I open this now, engine demo, type, let's go, type आ तो गया, but it did not print the type. Why did that happen? Why did it not print the type? Okay. ठीक है. If it is an on-time event, I don't think I should have removed the console log. Entry. Entry की spelling सही तो है? Oh, my bad. Okay. Whoa. अभी तो एक issue कर रहा हूँ. Might get bounty. Let's go. अभी 3 project कर रहा हूँ. मैं go till morning. Let's go. Actually, I was going through lecture, but I gave web through. Lecture is around monitoring and logging. Oh, yeah. Dude, even I have to like kind of do that.
Send me your Discord. Hell yeah. Point is, what was I going to do? Over here, I was going to remove this. Why? Because I'm going to log this now. I do have type. Event. Where's like a block? I want like a block. Do I not have a block? By the way, stream पे तुम लोग को लोफाई सुन रहा है क्या? Oh, आ रहा है. Okay, great. गाना चल ही नहीं रहा था. Bulgaria, Ukraine. Okay. Is there no lunch as the title here? There is no lunch as the title. Oh, मुझे सब इसमें event ही क्यों दिख रहा है? What? What am I? Rundown for each. Yeah. You know what we're going to do? This is what we're going to do. ID. Yeah, wait. ID. This is entry dot ID. Yeah. Type. Entry dot type. Okay. Demo. Let's go. How is it all events? Are we parsing it somewhere? Well, that's like half the issue, right? Field. Oh, I'm an idiot. That's what's happening. Completely. Yeah. एक second. Just also going to add this. Entry. तो थोड़ा स्मार्टली करते हैं. Is event entry dot type is equal to event, and this will be for your ID. Yeah, this will be for your ID, which would be entry dot ID. Yeah, let's go. I don't see a false. I should see a false. Why do I not see a false? Let's go. Oh, but there is no. Oh. ये तो इशू हो गया ब्रो, क्योंकि लंच ब्रेक तो मेरा कभी पार्स हो ही नहीं रहा ठीक से. फिर यू नो व्हाट आई मीन, लाइक दैट शुड नॉट बी देयर. बट आई थिंक आई एम पार्सिंग देम रॉन्ग. आई थिंक इनको हटा दो. Let's go back to the previous बिना किसी इसके. Then demo. Not really good song.
एक तुम लोग को नहीं, तुम लोग के तो लोफाई चल रहा है ब्रो। व्हाई एम आई सिटिंग लाइक, व्हाई डज इट लुक सो क्रैम्प्ड? भाई तुम लोग को क्या रॉक म्यूजिक चाहिए? लो। मैं तो स्ट्रीम पे लोफाई चला रहा हूँ। आई विश आई कुड प्ले लाइक स्ट्रीम यार्ड से डायरेक्ट सॉन्ग्स, बट लाइक जब तक ओबीएस इंस्टॉल वगैरह करूँ, बट अभी like, इतना मेहनत नहीं करना। आई वांट लाइक फोकस ऑन कोड इसमें। रियली लो, बढ़ा दो। देयर यू गो ब्रदर, हल्का सा डन। डेमो प्रोजेक्ट, dude, holy shit, I get the issue. I think this was just like doing it wrong all along. This is where we go back to the PR we made. Closed, thank you very much. हाँ, I think यही वाला था। लंच ब्रेक, हाँ इसमें तो ठीक चल रहा है। मैंने क्या चेंज मार दिया? What change have I done? I don't think I've changed anything. Have I changed something? There is no change. What did I do? Maybe I need to like refresh. Hold up. इसको बंद करो। dev. Oh, yeah. I don't like that. इसको हटाओ। वो खुद ही हट गया। Nice. Okay. What was the function called? Make table, right? Make table. There you go. Make table. Use sheet util. Not utils.ts. Make table. Thank you very much. Okay. Now that we have this, now let's start. Really look good. Let's go. And demo. Yeah. And then. What? तो मैंने इसमें कैसे PR कर दिया भाई? What? There is no difference. There is literally no difference. How is that? What? I haven't changed anything. इसमें हटा दिया, इसमें हटा दिया। Boss. Do I need to like change stuff? Let's like stop everything. Yeah. Okay. Let's start from scratch. Let's also remove rm dot on time. Okay. Now let's start from scratch. Okay. तुम अपना सर्वर इनिशियलाइज करो, एसेट्स वगैरह। Thank you. Now we initialize client. Okay. हटाओ। Okay. I want to close that. Okay. See, you see this? Yeah. I'm going to go to X calendar. Thank you very much. Let's go. Yeah, there we go. Alarm बज रहा है क्या मेरा? Wow, it's 3:30 almost. Crazy.
Okay, let's actually close this and sleep off because like मेरे को इतना भी stretch नहीं करना. Just want to paste it here. Okay, good. Okay, thank God. I was going to throw myself off the room. And then Q sheet util. There you go. Make table. Let's go. Okay. Now we add in a type, right? Event type, or not event type, sorry. What would this be called? Rundown type? Let's just call it type, it's fine. Let's not overthink that part. Now let's that is client side, right? Q sheet util. Yeah. So now let's refresh for good measure. Because now my logic is कि पर तो delete करो. Yeah. Lunch break. Great. Let's come to yeah. Okay. Now I should have like a type. Wow. Not RN. Demo. Yeah. Okay. Let's go. Why did it only come for this event? Oh, okay. Okay. Types on art. What? Ah, because custom wo hai, right? Yeah, that makes sense. That's not too hard. I could just boom, 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 boom. That's not a biggie. You can come back here, remove demo. For good measure, refresh. Okay. Nice. I like that. What do we do now exactly? यहाँ पे मेरे को import करना है, right, data को. Import spreadsheet. Where was my upload common API, right? Common / API / Excel. Upload. Let's go. सर्वर साइड पे देखना पड़ेगा क्या मेरे को? Apps server Excel service. Let's go. There's like a parse Excel. Let's go, dude. Parse Excel mentioned. Parse Excel utils parser. Parse Excel. It creates an import map. Great. To lowercase. Oh, problem solved. Yeah, that's done. How do I delete this? Move to trash. I don't know what I have here, so I'm going to just go to a new tab and close it. Because like, मेरे को genuinely नहीं पता कुछ sensitive है कि नहीं. Sheets.new. Now I'm going to import. Yeah, this over here. SAR. What SAR?
You know, I wish I had like a code heavy task. This is like just a bug figure out code and whatnot, and like I think it's like a one line change. But you know, like Mission Impossible ka background music and like a code heavy task. Why did that not come, by the way? Did I do something wrong? Import, upload. Yeah. Import. It's like right there. Does the CSV have to end with a comma? Is it that? Okay, which is this? Okay, I'm going to do the greatest remap of all time. QW, boom, 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 boom. कितने हैं? 14, right? 14 at W. Nice, at W. Let's go. That was a pretty simple remap. That was not great. Sorry, guys. So what is wrong? I'm genuinely confused. क्या करने जा रहा हूँ? Okay, you know what? We're gonna remove this. We're gonna do this. We're gonna go to. Where are we gonna go? This is parse Excel. That's great. Make table. इसमें था क्या? Q sheet utils. Make table. Yeah, you're gonna come back up. You are also gonna come back up, and now you're gonna get refreshed. Let's go. तुम लोग इधर हो क्या by the way? Crazy. I don't know why, but okay. Are we gonna remove that? We already removed it. Great. Let's go. Just for good measure. Ow. Okay. Now I first open it here. Thanks, Yash. Okay, great. What do you mean? Is that not how it works? Demo. Yeah. Boss. What if I take out the type वापस? Oh, Lord, sorry. Crazy भाई तुम. I hate Excel sheets. I just want to be very clear. I hate Excel sheets. Just I'm saying. Okay? This is always there. हटा ऐसे. Move to trash. Go to sheets home screen. I will go to my new tab. हटाओ. Sheets.new. Yeah, I like the type thing being at the end, you know? Okay. RM demo.
Great. Okay. पहली बार में क्यों नहीं हुआ? Was it something didn't get rendered properly? Okay, point is, now we test fix import probably. Okay, now we download this as an Excel sheet. What is the khali? Skip? Yeah, okay. Yeah. Now we clear the rundown. Real test. नहीं हुआ. Shit. What is the issue, bhai? Yeah, it's not getting rendered as a block, right? What's the issue? यहाँ पे block आ तो रहा है. Is it because yeah, we'll have to check how we're parsing things. Okay, this part is good. I want to have the type. Even the maintainer mentioned that we should have like a type thing. Okay, ये हो गया sort. If it's a delay, don't add it to the. Okay. If it is an event, then do this basically. Put it into the row. It is okay. We will just not have the data for other fields. Okay. This is where the delay block is coming. Okay. Block event मतलब जो भी है. So this part is sorted. अब import from spreadsheet में कैसे कर रहा है? Import भाई chill from spreadsheet. Yeah, upload Excel. Let's go. Upload Excel. That's right. Common. Yeah, I think we're going back to the server, right? So I need to check how it's being stored at the server and how it's being rendered. How am I seeing if it's being rendered? I know how to check that. Yeah. I think I know how to check that. Do I know how to check that? Rundown menu. Not export. Why would I need export? It's extracted app.
Okay. Oh, I think it's event editor. Yeah. Oh no, event editor. Right, man. Right. Yeah, I think it's this one only. Oh. So we have rundown header and then rundown. Let's go. This is what we want. Rundown.tsx. But yeah, let's go. Nice. Clone entry. Okay, यहाँ पे हम upload कर रहे हैं, right? So we will have to check that over here. On time rundown, title index, Q index, notes. Okay. Ah. I don't think we're saving the type over here, are we? Time start, end start, time and duration, Q is public, skip, color, end action, entry ID. Okay. Oh no, हम यहाँ पे करें. Maybe time type block. If event type is block, maybe. How are we saving data? Projects? No, I don't think it's projects. I don't think it's that either. I think it's uploads. It's not uploads. Somewhere here something is happening. Chalo, bye Yash, good night. J is equal to timer type index. We check if we have a. It says yes, I don't know. Oh. Column का क्या है? Row, okay. Row of J. Okay. Timer type index. What is timer type index? If event, maybe time type. If it's a block, event.type is a block. Oh, is it over here? Make string. What is make string doing? Parser, utils, make string, val fallback. Okay, it's making the string basically. Trim as fallback. Okay. And chose a variable as a string. It skips object types. Okay, if type of is string, return that. If it is null or it's an object, return the fallback and then return. Oh, if it's not a string, number या कुछ basically. Got it. Okay, so we're making that particular column as a string. Got it. So I don't think इधर कुछ change है, but I would like to timer type index. End action. What? To do except generating hundreds of reports map.
We check if you have set a flag for a known field. I think we're checking it here, but okay. Like, what do I? If j is equal to timer type index, but this is null, right? Or is it being assigned over here? Custom. Okay, there you go. No, that's custom. Oh no, timer type. Yeah. Oh, do I need to call it timer type? Is there no timer type? Yeah. Where is that server? Okay. ID. हाँ यार, बट इसमें हम आईडी वगैरह कहाँ पे रेंडर करा रहे हैं? Where is this rundown rate? Details. Oh, ID आ रहा है. Where is the? We have an ID. How are we? You know. Like, this should not be timer type, it should be type, or like event type, something like that, right? Or maybe it's already here. Am I missing something? Time start, time end, timer type. End action, time danger, ID. Okay, so here's what we're going to do. Const handlers. These are handlers. Okay, where are we using these handlers? Okay. Okay. If it's a block, event.timer type. Do we have a timer type on the front end? Entry dot timer. तो बस type है boss. Actually, you know what? Let's log from the server. क्या ही कर रहा है? So I want to log this control.log timer type index, timer type index, and then maybe time type, maybe time type, maybe time type, yeah. Okay, is that running? Let's go.
approved. ये आ गया. मैंने अपलोड एक्सेल में करा कि क्या? One way to find out. Export. Okay. I think I have to upload now. आ जा फिर. Import. Replace. Surround करने कर देते हैं. Oh, what was the difference? Okay, so let's do this. Let's download that. Oh, there you go. So I'm guessing null are your lunch breaks. लंच हटा ही दिया सारे ब्रेक्स. ओके, अपलोडेड विद 14 एंट्रीज. बट यहाँ पे 20 थे, राइट? सो व्हाट ऑल वाज रिमूव्ड? 1 2 3 4 5. I'm guessing 6. So why were these removed? Maybe time type. Countdown. So this would be an empty string. Is that what's happening? क्योंकि टाइम टाइप में ब्लॉक तो आ ही नहीं रहा, right? Like over here, none of these have a timer type as block. Because that doesn't have a timer type block, this is never being passed, and you're assuming कि oh, this is what's happening.
So because this is what's happening, तुम यहाँ पे टाइमर टाइप ही चेंज कर रहे हो. Oh, you're validating. Okay. So if we go here, on time utils, packages, utils, source, Excel. Timer. How can I run down utils? Probably timer. Validate. No. Validate action. Validate events. Yeah. Validate timer type. Let's go. Object values. Timer type includes maybe timer type as timer type. Okay. Where is timer types? On time types. Timer. Oh, timer type. There you go. Got him. Yeah, so maybe time type हम कभी ब्लॉक डाल ही नहीं रहे, right, in first place. Deep insights this. Okay, so we have a countdown and a count up. Now, what we are checking here is कि maybe time type is a block, but इधर block option है ही नहीं, right? Okay. Yeah, I think we're gonna have to like console log this again. A for each field. कोई भी दिखा दो यार. Okay. But if I go to something like lunch, where can I find lunch? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. I don't see it. You have to go through everyone. Okay, the type is event. The type is event. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. No. सब इसमें तो oh, you know what I need to do? Yeah. What? Oh, okay. Fine.
हाँ 13 1 2 3 where are these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एटलीस्ट तो होने चाहिए राइट or 0 to 13 why am I getting only events then and how is it even possible कि मैं I'm so confused right now. You can close. How is it all events? Okay. So that is 0 to 18. Yeah, but these two are still missing. How? ये कहाँ से आ रहे हैं? You know, I think I know क्यों नहीं आ रहे. Because I'm an idiot. Knew it. I knew it. It is. Yeah, I'm pretty sure there is something. Ah, there you go. If it is not a block or a known type, we don't import it. Okay. Something is off in the server side logic, I think. Okay, it is 4, so I don't know if I should keep streaming. I think like maybe इसको बंद करके sort करता हूँ. चलो, I'll end the stream here. I'll open इसका PR issue तो पता चल गया. Solve करके 2 घंटे stream, not bad. चलो, I will end. Bye bye.